Today is 15th March and we are starting science and tech subject. We are beginning with the NCERT, that is class 12th biology NCERT. Today the syllabus for oral test is chapter 1, 2, 3 and 4. All right, so let's start. The first statement is all organisms eventually die. All organisms eventually die. 5 seconds. Give me thumbs up for yes and face for no, and or that don't know signal. Quickly, Tamil, Shivangi. So jaldi karo. All organisms eventually die. मेरा नेटवर्क खराब था. All organisms eventually die. Okay. Shivangi, why is it right? Common sense? Yes, sir. At some point they have to. If this is commonsensical, then why will UPSC make a statement like this? Is it not too absurd to make a statement like this? Yes or no? Yes, sir. कुछ ना कुछ तो कैच होगा ना. अगर इतना सिंपल, मतलब छोटे बच्चे को भी, 5th क्लास के बच्चे को भी पता है. आई थिंक बदमाश को भी पता होगा, अथर्व को भी पता होगा. ऑल ऑर्गेनिजम्स इवेंचुअली डाई. समझा, there is a catch. कुछ कैच है ना? कुछ कैच है. Got it. One single celled organisms do not die. These are immortal. These are immortal. Okay, except for single, Yes, sir. like no individual is immortal except for single celled organisms. So they don't have natural deaths. इनको वो वैसे कर दो तो अलग बात है. Right, sir. ठीक है. वो तुम्हारे फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है ये चीज. Parrots or let's see, crows can live as long as parrots. Crows can live as long as parrots. 5 seconds quickly. Yes, no? Okay. Anjali, why is this false? So I just went by the logic of it. What? That each organism has their own lifespan. Mm-hmm. That is why, and crows, I think, are slightly more hardy than parrots. I may be wrong also. Then no, then can live. It says crows can live as long as parrots, right? Tamil, why is it false? So it's a standard fact, sir. Oh, it's a standard fact. No, it's not a standard fact. Who remembers lifespans of organisms? Shivangi, why is it wrong? So I had read somewhere that parrots live a really long life. So I just took a guess here, took a call. The point is, एक चीज तो yes, this is something given in your book, that parrots are like almost like 150 years. It's very hard to imagine such a small bird living for 150 years, 140, 150 years. Also, if it said, the statement is crows can live. When I say crows, means generally the species, like that is a normal behavior. So that's the normal life. So normal life for parrots is like 140, 150 years. In your NCERT also for crows, it's mentioned like 15, 20 years. When I say crows can live, so in this statement, the can is being subdued by crows. Crows means generally crows live for as long as parrots. So हमने information तो लिया NCERT से, yes, but यहाँ पे थोड़ा grammar का हमने वो किया. Okay, if it said a crow can live, तो probably यार, maybe, oh, but crows means generally the species can live, तो वहां पे नहीं आएगा. Okay. So is this similar to the can normally go on carving wala? हाँ. Sir, could you please repeat this statement? What you are I said when I use the word crows can survive for as long as parrots. Crows live
for as long as parrots. Okay, that's a normal lifespan. In our books, it's a standard fact from the book angle, because UPSC generally gives these kind of statements. So we know that parrots live for long, but crows do not live for long. Crow as a species does not live for long. It's, almost 10% of parrot's life. Parrot is 140, 150. Crows is just 15 years. Crow lives just 10% of the length of a parrot's life. But when the statement is a crow can live or some crows can live, then it's okay. Then it can be correct. Some crow aa gaya na. But when it says crows can live, then it means generally crows live or not. Do you get my point? Yes, sir. Yes. When it says some crow, तो some में तो हो सकता है, देखो possibility कुछ भी हो सकती है, but as a species you have to go by the main lesson. Yes, Samakshi. Will it also be deep fact? Which one? The statement. Crows can live. Because parrot का भी lifespan और उसका भी lifespan. देखो ये comparison हो रहा है. जब comparison होता है ना, तो there is an assumption of some knowledge. Okay. Without that, how will you say? ऐसे technology में जब comparisons होता है, then there is a assumption of some knowledge. Then only you can compare two things. Right. So when I say this as long as parrots, then there's an assumption that you have to know what is given in the NCERT. Okay. Okay. Next is organisms which reproduce asexually. Organisms which reproduce asexually have उसको क्या बोलेंगे? Offsprings. Offspring thoda sa, just adjust it. Okay, for that I don't have a better word. Have offsprings which are exact copies of their parent. True or false? 5 seconds. So please repeat once. Organisms which reproduce asexually have offsprings which are exact copies of the parent. True. Standard fact? True. Okay. Asexual reproduction is only among single-celled organisms. 5 seconds answer. Right. Standard fact. Okay. Also, only is making it deep fact. Reproduction in amoeba is in the same way as that in yeast. Reproduction in amoeba happens in the same way as in yeast. 10 seconds, quickly. Sir, are you talking about process or type? Reproduction का process, मतलब जैसे भी reproduction होता है. Okay. It's a standard fact. Okay, यहाँ बुक में दिया हुआ है, वो देख लेना सेम होता है या नहीं होता है. We don't need to spend time on this. आगे चलते हैं. सर इसमें कुछ ET लग सकता है क्या? नहीं, ये Okay. बुक से ही करना होगा. Okay. मतलब बुक में जो दिया हुआ है उसको ET से ना Got it. डील करें तो बेहतर होगा. हाँ जी. Okay. Because amoeba and yeast are both important organisms. Huh? Buds are asexual reproductive structures of sponge. Buds are asexual reproductive structures of sponge. 5 seconds, quickly. Prabha, take a call. I'm leaning towards true actually. Why? Because asexual reproductive तो है ही. Buds are asexual reproductive. Whether they belong to sponge or not, like there's so many different organisms. The sponge का है या नहीं, you can't recall. Like nothing about sponge Sponge. tells me that it won't be.
स्पंज इंपॉर्टेंट है या नहीं? आई मीन बुक में मेंशन होगा या नहीं? एनसीईआरटी में है, स्पंज तो है ही। है ना एनसीईआरटी में? हाँ और ये अगर इम्पोर्टेंट है तो एग्जाम्पल होगा या नहीं एनसीईआरटी में इसका? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। तो एसएफयूडब्ल्यू नहीं लगा सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है, एसएफयूडब्ल्यू, हाँ स्टैंडर्ड फैक्ट तो यूज लो, ओके ठीक है, तो राइट। स्पंज के कीवर्ड पे ये एसएफयूडब्ल्यू हो रहा है, ठीक है। एसएफयूडब्ल्यू होने का चांस ज्यादा है बिकॉज अगर इसको करेक्ट करके दे दिया ना, ये गैम्यूल्स करके कुछ लिखा है स्पंज के साथ, अगर इसको करेक्ट करके दे दिया इट बिकम्स अ वेरी नॉलेज हैवी स्टेटमेंट। इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल दीस थिंग्स। हाँ गॉट इट, फिर गॉट इट। बच्चों को क्या वो रह जाएगा, मतलब यू नो दे विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट, देन ओनली डॉक्टर्स और दे विल स्टैंड अ चांस ना। सर एक बार मतलब ये स्टेटमेंट रिपीट कर दो क्या? कौन सा वाला? ये जो लास्ट वाला आपने बोला, मैंने ये स्पंचेस वाला। कहा स्टैंडर्ड फैक्ट यूजुअली रॉन्ग क्यों होता है, बिकॉज ये हमको फ्री स्टेटमेंट कर दे। स्टेटमेंट Buds are the asexual reproductive structures of sponge. Okay. so I'm just saying ओके। Google, apparently the internal buds of sponge are called gammules. They're a type of buds. उतना नहीं जाना अंदर, बुक में लिखा है बड्स हाइड्रा गैम्यूल स्पंज कोनिडिया पेनिसिलम, बस। So we are assuming कि gammules are different from buds because we are saying as false. per the books yes, as per the book yes, अच्छा okay. because buds is very specifically for hydra. Okay. Okay, buds लिखा है, देखो I'll read the statement. It says other common asexual reproductive structures are conidia bracket penicillum, buds bracket hydra and gammules bracket sponge. पेज नंबर 6 last line. Okay, so क्या कुछ डाउट है क्या प्रभा? नहीं सर, मूव ऑन करते हैं। हाँ, so the lesson that we have to learn here is that there are two kinds of questions possible here. If UPSC wants to test knowledge तो वो match the following में दे देगा, column 1 asexual structure, column 2 ये तीनों। ओके और ऑप्शन कुछ ऐसा बना देगा कि एक के दम पे तुम्हारा आंसर आ रहा है, तीनों को यूज करना इन एन ऑप्शन थोड़ा हार्ड है। आई डोंट थिंक वो इतना टेक्निकल बना के देगा। अगर एक स्टेटमेंट में आएगा तो मोस्ट लाइकली एसएफयूडब्ल्यू। ओके यस। जिंजर इज एन एंजियोस्पर्म, ट्रू और फॉल्स? 5 seconds. Shivangi, why is it false? Don't know exactly. Took a What call. are I just said asexual. I remember with respect to asexual reproduction, I read about ginger somewhere, so I just took a call based on that. So थोड़ा सा जल्दबाजी एंड मतलब सोचा नहीं। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट Flowering. advanced types of plants. हाँ, Can you say that they're the most advanced type of plants, right, sir. complex kind of हाँ. plants? Hmm. And यहाँ पे can we also say कि जो प्लांट्स हमने सुना होगा रेगुलर यूज के होंगे वो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के होंगे? कैन वी से दैट? क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल हमको ध्यान आ रहा है विच इज नॉट अ एंजियोस्पर्म बट वी यूज इट रेगुलरली? एक एंजियोस्पर्म होता है और दूसरा कौन सा होता है? जिम्नोस्पर्म्स होता है। Right, sir. यस। व्हाट इज द डिफरेंस? So angiosperms में sexual reproduction होता है based on what I read. तो ginger I had read in context of asexual reproduction. नहीं, ऑल And एंजियोस्पर्म्स हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट तो डिफैक्ट हो गया ना, कुछ एंजियोस्पर्म्स में so एसेक्सुअल भी पर हो सकता वहाँ है। पे book में अच्छा मैंने flowering plants statement से Covered seeds will be there in angiosperms, not in gymnosperms. तो एक बार ये देख लेना कि यू नो दिस अप्रोच कि अगर एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ प्लांट्स, एंजियोस्पर्म ज्यादा सुनते हैं जिम्नोस्पर्म्स के मुकाबले, most developed, हाँ. मोस्ट डेवलप्ड एंड पॉपुलर आल्सो, मतलब हम एंजियोस्पर्म ज्यादा सुनते हैं normally हाँ. compared to gymnosperms or any other category, and if it is a हम्म. common plant it has a higher chance of being an angiosperm. ये मैंने I mean just this
approach if it can work. एक बार So देख लेना. जैसे बुक में एक स्टेटमेंट लिखा था, all flowering plants reproduce sexually, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था आई थिंक बुक में फर्स्ट पेज में. तो उसके बेसिस पे आई मेड दैट डिडक्शन कि जिंजर में तो फ्लावरिंग नहीं होती है एंड No, तो डिडक्शन ही गलत है तुम्हारा. All flowering plants reproduce sexually doesn't mean whatever. I mean, all non-flowering will reproduce asexually. सो वहां पे टर्म एंजियोस्पर्म उसमें लिखा था कि आई मे बी रॉन्ग, आई विल गो बैक ऑन दिस एंड चेक अगेन जस्ट टू एक बार देख लेना. So what you have to check is just Google gymnosperms and common household use. Gymnosperms common household use Google देख लेना. अगर कुछ एग्जांपल निकल के आता है तो एक बार थोड़ा हमको वो है. बट अदरवाइज अगर एक कॉल लेना है, एंजियोस्पर्म ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो अगर वो है तो गो विद एंजियोस्पर्म, दैट इज बेटर. इन योर बुक एग्जांपल्स आर पोटैटो, जिंजर, अगावे, ब्रायोफाइलम, हाइसिंथ, all are angiosperms. Okay. All right, sir. So the main determinant factor between angiosperms and gymnosperms is said to be harsher conditions, because in gymnosperms they have मतलब वो pine type के जो होते हैं ना, वैसे रहते हैं. So if we think about where ginger is grown also, that हाँ, also. तो वो तो हम नॉर्मल बिल्कुल. And this is why angiosperms are more popular, because we don't have harsh conditions. Humans don't live in harsh conditions, huh? Right, sir. तो एंजियोस्पर्म ही होगा फिर. ठीक है, मतलब अपना So अप्रोच ठीक लग हाँ, रहा है. और इसमें लिखा, मैंने गूगल किया अभी, जिंजर इज अ फ्लावरिंग प्लांट, सो माय assumption was also wrong. ओके, मतलब Right. उतना नहीं पूछेगा वो, बस एंजियोस्पर्म्स में और एग्जांपल में कुछ ऐसे करके पूछ लेगा. Right, sir. Got ठीक it. है. तो इट सीम्स लाइक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. बाकी अगर कुछ, इफ यू फाइंड एनीथिंग, एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, प्लीज शेयर. आगे चलते हैं. ओके, वाटर हाइसिंथ is the world's most aggressive invasive plant. 5 seconds quickly. ओके, देखो, आई थिंक इसका आंसर ट्रू होना चाहिए, बिकॉज व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी? डिफेक्ट, राइट? डिफेक्ट. बट is it not something which is knowable? Like, we should know which is the world's most aggressive. We will know which is the world's most aggressive invasive species. और यहाँ पे टेरर ऑफ बंगाल करके, और इस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ, इतना जनरल तरीके से दिया हुआ है. This is something similar to the statement that bees are the most important pollinating agents. Yes or no? And I think I found evidence of that also. In your book only it is mentioned. They are the most predominant, ऐसे करके लिखा हुआ है. Guys, हाँ ना, कुछ तो बोल दो. Am I making Yes, sir. sense or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Water hyacinth can be found in ponds. True or false? Quickly, Asuk. True or false? True. Okay, सबको नहीं, अब मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ. Just tell Okay. yes or no. Okay, so pond में water hyacinth can be found. Water hyacinth can be found in rivers. Shivangi. True or false? So false. Why? So rivers are fast flowing now, stagnant water. शाबाश, शाबाश. तो यहाँ पे वो can be वाला is not important. Okay, the principle is important कि वो stagnant water में होता है. Okay, Right, sir. चलो. अंजलि, oceans. Water hyacinths can be found in oceans. True or false? So false. Why? So because the salinity should have an effect, and also it's very turbulent. True. And would have heard हो जाता, right? It's an invasive species, and we have heard of kelp forests. Yes or sir. no? Kelp Yes, forest सुना हुआ है. Yes, sir. तो अगर कुछ इस टाइप का होता, पक्का हमारे न्यूज में या ऐसे में आ जाता कि सैलिनिटी भी बेयर कर लेता है, वो भी कर लेता है, तो एस्चुरीन एरियाज में कुछ ना कुछ पक्का वुड हैव हर्ड हो जाता, राइट? हाँ जी सर. शिवांगी, ये सामाक्षी. puddles. Water hyacinth can be found in puddles. True or false?
ट्रू। तो puddles हाँ मतलब गड्ढा है ना, गड्ढे में पानी। हाँ ट्रू सर, बिकॉज स्टिल वाटर है तो हो ही सकता है। You are not talking about the size of the puddle and all of that. puddle 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 हम I mean puddle themselves वो are they सड़क वाला puddle तो नहीं, normal general puddle भी still water है। I think principle would remain the same, still water होना चाहिए। चलो आई थिंक इतना नहीं पूछेगा इस थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी आ रही है इधर नहीं So, पूछेगा हाँ सर। sorry, sir. Rivers में मिलता है water hyacinth, and Okay. the reason I was thinking of it was because of the river in front of home that I've shown you. And अच्छा I googled, तो वो आ भी रहा है, तो शायद still water वाला principle हमें एक बार check करना पड़ेगा. still water वाला you know then what the case can be if the speed of the river is slow enough it can be found To not flow. Yeah. स्टिल वाटर वाला जो कॉन्सेप्ट है इट मींस अगर स्लो एनफ है तो फाउंड हो जाएगा ओशियंस में नहीं मिलेगा बिकॉज सैलिनिटी वाला इशू इंपॉर्टेंट है वी नो इट्स अ फ्रेश वाटर प्लांट Yes, sir. है ना तो रिवर्स वाला केस तुम्हारा चलो ठीक है अच्छा किया तुमने एक वो कर दिया फाइन सो इफ इट इज स्लो एनफ देन इट कैन बी फाउंड राइट आई थिंक जहाँ डैम्स वगैरह होते हैं वहां पर होता ही होगा, वहाँ हो पानी जहाँ रुक रहा जहाँ है। जहाँ इट्स अ रिवर टेक्निकली, बट रुक गया पानी। जहाँ स्लो हो गया जहाँ वहां हो जाएगा अगर ऐसा कॉम्बाइन करके दे दिया कि इन दी initial stages of river development water hyacinth can be found वहां नहीं होगा बिकॉज Hilly areas में फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। हाँ हाँ ऐसा करके कुछ दिया तो नहीं होगा ठीक है ओके mammals can reproduce asexually mammals can reproduce asexually 5 seconds quickly would have heard right Sir, हाँ so water hyacinth can be found in oceans. ये false है ना? can be found false ही होना चाहिए ना हाँ, ओशन में तो मिलेगा ही नहीं तो कैन भी लगाया देन भी नहीं हो सकता. हाँ नहीं ये तो यही तो डिस्कस किया हमने क्या वो इंटरनेट पे कुछ बोल रहा है क्या ओशन में भी मिलता है क्या नहीं नहीं नहीं. बिकॉज ऑफ सैलिनिटी वो एकदम चेंज हो रहा है ना फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड ओशन और वो सब एकदम टेम्परेचर और वो सैलिनिटी सब चेंज हो रहा है तो ठीक है ये वाला वुड हैव हर्ट हो जाता अगर सैलिनिटी वाला होता केस आगे चलते हैं sexual reproduction requires at least 2 parents sexual reproduction requires at least 2 parents 5 seconds quickly जल्दी करो आंसर गलत इमोजी चला गया, सॉरी, ये okay false है. false okay I got scared. no so requires at least 2 parents given in your book also standard fact it can be 1 parent also आगे चलते हैं अच्छा I think there was some question क्या कि bamboo only once in its lifetime ये कोई PYQ था या किसी ने कोई mock test का question दिया था So we have आपने discussed पूछा है, this. मैंने ही पूछा आपने था पूछा शायद। हाँ, हाँ. हाँ, कब पूछा मैंने नहीं ये तो पहली बार आ रहा है नील कुंजी जब आप पूछ रहे थे शायद नहीं आपने 12 years नहीं bamboos बैम्बू flowers वंस इन लाइफ टाइम, वंस ये इन मैंने 50 मैंने years। मैंने ही पूछा था क्या हाँ जी Well सर. done। अच्छा ओके आपकी आवाज में क्वेश्चन गूंज आ अच्छा रहा है। Yeah. आई डोंट रिमेम्बर मेरे बहुत मेमोरी खराब है सो सॉरी फॉर दैट ओके तो ठीक है लिखा ही हुआ है बुक में चलो आगे चलते हैं नीला कुरिंजी वंस इन 12 years नीला कुरिंजी का साइंटिफिक नेम एक बार देख लेना स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना ओके जो बहुत पॉपुलर चीजें होती है ना उनका टेक्निकल नाम भी यूपीएससी दे सकता है जस्ट लुक एट देयर नेम्स वंस mammals are seasonal breeders mammals are seasonal breeders true or false 5 seconds Prabha why is it false थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है. सर प्यूबर्टी के बाद होता है, बट थ्रू इफ वी सीजन इज ईयरली, थ्रू आउट द ईयर you can, I think, but there's no restriction. If the organism has hit after puberty, then you're all year round. I don't think there's a restriction. That's it. okay Samshi why is it right
I'm thinking behavior wise, जैसे हम polar bears का पढ़ते हैं, एक सीजन में होता है, whales का सीजनली है तो correct, अच्छा हाँ तो इसलिए तुम कह seasonally रहे ओके हाँ yes नहीं देखो अगेन थोड़ा सा generally हिडन वाला जो पार्ट है the word generally is hidden. Generally mammals are seasonal breeders, which is not. You would have heard about it because the book says mammals, many mammals, especially those living in the wild conditions, are seasonal breeders. Many other mammals are reproductively active throughout the phase and hence are continuous breeders. okay So this statement should be wrong because it is talking about all mammals together. okay ठीक है right? can भी होता तो बोल सकते थे हाँ of course can भी होता तो बोल ही सकते हैं but यहाँ पे hidden है generally mammals are seasonal तो ये एक थोड़ा सा एक अच्छा वो है just fill these words the statements become more clear. True या false? Sorry. false हुआ ना would have heard हो जाता ना otherwise हमने क्या सुना है कि कुछ mammals seasonal हैं लेकिन कुछ mammals continuous breeders भी हैं. तो सर आपने यही से पूछा था mammals are the seasonal breeder. हाँ तो तो कुछ generally तो हो सकते हैं ना तो true हुआ ना. नहीं generally mammals are seasonal breeders हुआ ना इसका मतलब generally मतलब take mammals as a whole group taken together. तो mammals are seasonal breeder तो हम majority लेंगे यहाँ. हाँ majority क्या है? majority कुछ है ही नहीं ना because book says many mammals are seasonal breeders but many other mammals are continuous breeders तो वो बराबर सा दिखा रहा है तुम्हारा language book हाँ तो में. फिर seasonal breeder तो हुए ना. मतलब सीजनल generally ना भी ब्रीडर तो हुए लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये पूरे सब ऑल टोटल मैमल्स की बात कर रहा है तो जनरली मैमल्स आर सीजनल ब्रीडर्स ऐसे नहीं बोल सकते ना. सो ये डिफैक्ट एंगल होगा ना इसमें नहीं डिफैक्ट तो नहीं होगा इसमें स्टैंडर्ड फैक्ट ही है मैमल्स आर ऑलराइट सीजनल ब्रीडर्स लेकिन बात ये है अबाउट द नॉर्मल मोस्टली बिहेवियर कैसा होता है मैमल्स का ज्यादातर मैमल्स का बिहेवियर कैसा होता है ये पूछ रहा है. गॉट अगर इट ये बोलेगा कि वाइल्ड वाइल्ड मैमल्स आर सीजनल ठीक हाँ है ना ठीक है बुक में भी लिखा हुआ है कि स्पेशली दोज लिविंग इन द नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस आर सीजनल ब्रीडर्स मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल wild conditions are seasonal breeders. Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are continuous breeders. So तो is it not मैंने given? इसको Sir, डिफैक्ट एंड इसीलिए कंसिडर किया क्योंकि वी कांट नो अबाउट ईच एंड एवरी मैमल आउट देयर एंड बिकॉज ऑफ द ह्यूज No, नंबर नहीं शिवांगी देखो इस स्टेटमेंट में डिफैक्ट वाला sir, एंगल नहीं है कुछ भी इसमें वुड sir, हैव in हर्ट वाला gen एंगल ज्यादा है. ठीक है सर हाँ ठीक तमिल है या sir, in general consensus, we should consider natural only, right? Instead of artificial or constrained ones. no the point is your book is talking of many other mammals. This is the phrase that I'm concerned about. Okay, sir. Many So other mammals. sir, the statement which you said was, Mammals are could it, seasonal breeders. okay, mammals are seasonal breeders. So it doesn't have any constraint, No, no constraint. no constraints All are there. So we have to go with the general consensus, which Hmm. means having natural characteristics are the general consensus, isn't Hmm. it? Hmm. So right. by this idea, we can say that it is true, isn't it? Because as you said, in nature, they are seasonal breeders. Hmm. So can't we say that in the general consensus it should be true? I also thought of the same thing which you thought of, and I felt similarly that generally it should be right, but then the book is stressing on many other mammals in such a way that it is like almost an equal weightage that it is saying. That's why Yes, sir. like I'm going more by what is given as standard fact in your book rather than by logical reasoning. If we go by logical reasoning, yes, what you are saying should be right. Can we Sir, maybe check online, guys? सर mammals are seasonal breeder तो सर correct होगा ना सर. Generally mammals are seasonal breeder wrong होगा. Mammals can be seasonal breeder वो भी Can भी correct कहाँ होगा. बोला है? नहीं आपने Mammals बोला नहीं है are वैसे. बोला है. हाँ तो R mammals में तो are generally seasonal. hidden है ना सुख. Mammals जब मैंने R बोल दिया, mammals are seasonal breeders में generally hidden हो गया ना. Full statement क्या होगा? Generally mammals are hidden because this statement Indians are sentimental means what?
Generally, Indians are sentimental, right? This is a property of normal property, like which you'll find in most Indians, right? Okay. यही होता है ना, hidden हो गया ना? हाँ जी. हाँ. So maybe guys, you can Google continuous breeders, mammals continuous breeders, and just see if this doubt, can be resolved in a more substantial manner. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Fungi are asexual. Fungi are asexual. 5 seconds, quickly. Fungi are both asexual and bisexual. Fungi are asexual. False नहीं होगा. Fungi are both asexual and bisexual. When it says fungi are asexual, only with, of course, easy हो जाता. वो तो खैर कोई. We are just looking at these kind of statements. Mica is found in Kudarma, and these kind of statements. Fungi are asexual is a standard fact. Mica is found in Kudarma is not a standard fact, right? Yes, sir. Fungi are asexual is a standard fact given in your book, but your book is saying fungi are both sexual and asexual. So generally fungi are asexual. This statement means generally fungi are asexual, which is not mentioned in the book. Okay, sir. I think the mistake that we are doing in these questions is we are taking the word some. Some fungi are, we are replacing, taking the word some as hidden instead of the word generally. Some snakes are viviparous. Snakes are viviparous. Is there not a difference? Guys? So Yes, I sir. feel like there is difference, but I might be wrong here. In the past PYQs, is there precedence that this statement would be treated as true because there are cases that are possible where they are asexual? तो ठीक है, it'll be true क्योंकि इसको false करना. Like I'm just going by some PYQs that I might have seen. I couldn't be wrong, but देख लेती हूँ. देख लेना. I agree, sir. I agree with Prabhu on this because I've also seen this कि बहुत देखो, I exception think लगा के नहीं. सिर्फ तुमको इसमें क्या देखना है? What is the kind of language that is used in the statement? Have they used can? Have they used some? Have they used just the statement which I am saying with hidden generally? ये देख लेना. Whatever is the evidence that we have, we'll go by that. Okay? So please share those questions. Human beings have the maximum number of myocytes of all organisms. Out of all organisms, human beings have maximum number of myocytes. True or false? 5 seconds, quickly. Sir, could you please repeat it? Of all organisms, human beings have the maximum number of myocytes. Or yeah, myocytes, जो भी होता है. Sir, I don't know Anjali. this, but I'm doing ET. Okay, Anjali, take a call. Anjali, take a call, please. False. Why? So I just feel that there will be some species that will have more. Yes. So what is the technique you used? So I Deep don't fact. deep fact. Oh yeah, deep fact. Either deep fact or would have heard. हाँ If जी, humans had the maximum, would have heard हो जाता. हाँ जी sir. Or deep fact because you need to know all the species, हाँ right? जी sir. हाँ जी sir. आगे चलो. Peas is a pollination. Like peas require pollination. This is the statement. Peas require pollination. True or false? 5 seconds. Shivangi, quickly. Take a call. Why is it correct, Shivangi? So I just took a call randomly. कोई नहीं, जब कॉल है तो रीजन मिलना चाहिए. Likelihood peas requiring pollination ज़्यादा लगा. Peas requiring pollination.
ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग में और पॉलिनेशन में क्या फर्क है? आई माइट बी कंफ्यूज्ड इन माय अंडरस्टैंडिंग. पॉलिनेशन विल हैपन इन ऑल. जिसमें भी फ्लावर है पॉलिनेशन तो होगा ही, वेदर इट इज सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन इज डिफरेंट. तो फ्लावर है तो पॉलिनेशन तो होगा इफ इट इज रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली. Okay, so I think then it's right, because how I had framed is, I thought self-fertilizing is not the same as pollination. Peas is given as self-fertilizing in the context of self-fertilizing. तो एक बार ये देख लेना. I'm like not from science background or anything, so my concepts might be a little bit shaky. और अगले आगे में है ना 3 टाइप के पॉलिनेशन, तो उसमें भी Yes, शायद so एग्जांपल है. self-pollination, cross-pollination. ठीक है, तो ये देख लेना. The concept to be used here is स्पिनच वाला जो क्वेश्चन था 2022 में, नाइट्रोजन फिक्सिंग. स्पिनच वेरी इजी प्लांट, सिंपल प्लांट मेंशन्ड इन द बुक्स. नाइट्रोजन फिक्सिंग वेरी इजी सिंपल कॉन्सेप्ट, वुड हैव हर्ड. अगर करता तो वुड हैव हर्ड. तो यहाँ पर भी पी इज वेरी सिंपल, पॉलिनेशन वेरी सिंपल, वुड हैव हर्ड, व्हिच इज हर्ड गिवन इन द बुक्स. ओके, आगे चलते हैं. Most mammals are oviparous. Most mammals are oviparous. Quickly, 5 seconds. Fine, standard fact. All flowering plants show sexual reproduction. 5 seconds. स्टैंडर्ड फैक्ट है या नहीं साक्षी, ये बता दो. तो स्टैंडर्ड फैक्ट तो है, बट आई एम थिंकिंग इंसेक्टिवोरस फ्लावर्स भी होते हैं कहीं ना कहीं. मतलब आई एम स्लाइटली कंफ्यूज, लाइक कोई ना कोई तो हो सिर्फ सकता है ना ये प्लांट. बता दो स्टैंडर्ड फैक्ट है या नहीं, बुक में होगा या नहीं. बुक में तो होगा. होगा, बस इतना कॉन्सेप्ट है. बाकी नॉलेज की कमी है. इट इज ट्रू, इट्स मेंशन्ड इन द बुक. ओके, तो फिर टेंशन की बात नहीं. जहां स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड सही आइडेंटिफाई कर दिया फिर दिक्कत नहीं है. फिर देयर इज issue of knowledge. The more, and this is why the more questions you solve, these kind of things will get revealed. Okay, so that's why the value of sectional mocks now. Yes. Pollen grains usually cause severe allergies. Pollen grains usually cause severe allergies in humans. True or false? 5 seconds, quickly. Prabha, why is it correct? Sorry, some previous experience का projection, but I can see it's false. Okay, नहीं तो Anjali. मुझे बोला था. Anjali, why is it correct? So in the book I read that there was pollens cause severe allergy, but now to think of it, they've mentioned one certain pollen or something like that which causes severe, or maybe Use elimination techniques. Hanji, so then I'm wrong. No, which technique did you use? Pollen grains usually cause severe allergies in humans is the statement. Which technique did you use? So I went with like, because I've heard of it like that, but then it's wrong because No, what have you heard of? हाँ, नहीं बताऊंगा. What have you heard? so we generally talk ना कि pollen से allergy हो रही है like that. हाँ, तो तुम एक बात बताओ. We generally hear कि pollen से allergy हो रही है. What is the statement? Can you repeat the statement, please? You said most. That is where I made the mistake. I didn't say most. I said pollen grains usually cause allergies in severe allergies in human beings. अब बताओ क्या problem है इसमें? It would be all pollens would not cause severe allergies. Some pollens would. Some pollens would. Okay. What else can be the framing? When I say pollen grains usually cause means generally pollen grains. तो उसमें तो वो all वाला case तो उसमें included हो रहा है. Most वाला case included हो रहा है. हाँ? Defect होगा? How is it defect? Is it only? Not defect. If it's all, then it will be defect. Yes. If it is all, it will be defect. But when I said pollen grains cause severe allergies, means what is hidden? Generally, pollen grains, right? Most pollen grains, right? That is hidden.
हाँ जी सर। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? You did not convince me with your answer. Push it कोई नहीं आएगा. Simple सोचो. So then this should be standard fact. Okay. Because Now you are it's making some mentioned in sense. it's mentioned in the book, but then you have used the words usually. So okay. Oh, so it's standard fact usually not. Standard fact usually wrong. You're saying that? Yes, sir. But वो तो concrete facts होते हैं ना? So then This is a processable, simple processable statement, right or no? Yes, sir. Shivangi? So, because you said pollens usually cause severe allergies, these are like two extremes. Firstly, and secondly, वहाँ पे लिखा हुआ है that book में pollen grains are used as supplements by people, which means अगर generally होता, तो it would have, मतलब we would have heard about it, like शाबाश, maybe. बस यही है. Would have heard because this is such a Right. health risk. कितने क्वेश्चन थे? Benzene pollution, using wooden varnished furnish, right? Lead Right. pollution, cosmetics और ये monosodium glutamate और वो सब जो था. So many questions we have done. Anjali, can you connect the dots? Yes, sir. I think I went into the wrong. Would have heard ka. I took it in a different way. Yes, what you where you made mistake is this one statement. You took it like, what is the statement? Pollen grains of many species cause severe allergies. This is correct, of course, because here the stress is on some pollen species. That's correct. Not on most humans. When this usually cause in human beings means most human beings are usually affected by this in this manner. For example, if I say UV radiation, UVC radiation usually damages DNA in human beings, true or false? Totally false. It is false. Why? So because then we would have heard, na? So haven't you heard of UVC radiation causing DNA damage, cancer, etc.? So how is it false? Oh, then it's true because it causes cancer. Sorry, that's because you have heard. You have heard. Sir. Right? Tamil, why is it false? I saw your answer. Why is it false? So I think UVC usually damages DNA. Damages DNA. I felt it has to be like a very hard hitting statement. So this is a statement you should have heard. You would yes, have heard. I have heard, correct. sir. ABC I have heard, but I felt it will be wrong. Why? Give me a reason. What have you heard? What have you heard of UVC? Is it, there are only two ways of looking at it. One is it damages DNA. Another is it does not do any harm. Let us just take this benign statement. It does not do any harm. We are not going to the positive sense that it is very good, like vitamin D. It is. We are not going that. Also, another case is that it doesn't damage DNA to the level of DNA, but it causes some damage. ये भी तो possibility है ना? तो ये some damage is included in the statement. अच्छा, हमने DNA damage specify नहीं किया था statement में. Usually damages DNA in living organisms. Usually damages DNA statement है. So to be honest, मुझे ये ना UVC, UVA, B वाला standard लगता है, because I think I might be wrong here. I think we're expected to know the difference of A, B and C because it's important थोड़ा सा. मतलब हम अब हमारे level पे तो ये मुझे standard लग रहा है. So standard तो है ही. Knowing of UVC is standard. अच्छा, तो SFW, UW हो सकता है क्या? पता नहीं. नहीं, अरे SFUW वाला यहाँ नहीं आएगा. SFUW के स्टेटमेंट बहुत कॉन्क्रीट होते हैं, लाइक HTBC होते हैं वो स्टेटमेंट. I see that. हाँ. तो यहाँ पे तो मैं एक प्रोसेसेबल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना. UVC रेडिएशन. तुमको स्किन कैंसर का जब मैं बोलूँ, स्किन कैंसर मींस DNA is getting damaged, yes or no? Everyone will answer me. Skin cancer means DNA is getting damaged, yes or no? Everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. अब ये बताओ कौन सा रेडिएशन सुना है तुमने स्किन कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में? ये कंफ्यूजन मेरे को भी हो रहा था. UVB है, UVC है. UV स्टैंडर्ड फैक्ट. चलो UV बोल दो. UV बोल दो यार. UV तो हाँ, छोड़ दो. UV पक्का करता है, but whether it is UVC or UVB, I was confused. अगर हम अब एक्चुअली UVC भी दे सकता है UPSC because there is a question of filtration. क्वेश्चन था फिल्टर
वाला? Yes, sir. Order and हाँ whatnot. हाँ, उसमें यूवीसी मेंशन था क्या अलग से? UV था, UVC नहीं था, I guess. चलो नहीं था, कोई बात नहीं। कोरोना इतना हुआ, उसमें जो बल्ब आते हैं वो सैनिटेशन वाले, दे आर यूवीसी। यू Okay, शुड sir. नो अबाउट यूवीसी। Okay, sir. So UVC causes cancer. हाँ, यूवीसी कॉजेस कैंसर। और जनरली आल्सो इफ वी से यूवी, यूवी को हम नेगेटिव, कभी भी हमने यूवी रेडिएशन को पॉजिटिव में सुना है क्या? बस वो आरओ वाले एग्जांपल में जो है, बाकी तो अरे इट्स तो ऑलवेज नेगेटिव। आरओ पॉजिटिव कैसे? तुमको साफ पानी दिया, मार तो दिया ना उसने ऑर्गेनिज्म को। ठीक है मैं सर। तुमको हाँ जनरली वैसे पूछ रहा हूँ। गाइस, एम हाँ आई सर, हाँ मेकिंग सर। सेंस और नॉट? Yes, sir. इट शुड बी, इट शुड बी करेक्ट स्टेटमेंट। यस सर। ठीक है अंजलि, आर यू विद मी? Yes, sir. I've understood where I went wrong in the interpretation of it. Yes, yes. Okay, so whenever, now whenever you are seeing statements, look for the hidden words. Look for what can be other, what could be, if this if not this statement, then what? Try to frame, variations of the statement. Okay. सर आपकी इनिशियल स्टेटमेंट क्या थी इसमें? UVC, यार अब मैं भूल गया क्या एग्जैक्ट बोला था मैंने, लिखा भी नहीं हुआ है। UVC causes damages DNA. UVC usually damages DNA in human beings, कुछ ऐसे बोला था मैंने। तो UV, अब उसमें ABC पे डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज वो स्टैंडर्ड फैक्ट नहीं है। अगर ABC स्टैंडर्ड फैक्ट होता ना, तब लो डिसीजन, समझ गए? यूवी पे डिसीजन लो। यूवी जनरली नेगेटिव ही होता है, अगर पॉजिटिव होता तो वुड हैव हर्ड हो जाता। हमने कभी भी यूवी को डायरेक्टली ह्यूमंस के बेनिफिट्स के लिए, मतलब उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में आके नहीं पॉजिटिव सुना है। वो तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, वो सब में ठीक है, बट दोज आर इनडायरेक्ट यूजेस, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। यू गेट माय पॉइंट गाइस? आगे चलेंगे। Yes, sir. देखो, इट्स वेरी क्लियरली मेंशन्ड। अच्छा, अनदर थिंग, वेरी क्लियरली मेंशन्ड अबाउट कैरेट ग्रास, and I think this was asked in lemongrass question, one statement question 2021, carrot grass is given. Yes sir. Right? हालांकि this is not standard fact. कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास वही कैरेट ग्रास होती है। अच्छा वही है। और वो, हाँ, और वो कांग्रेस कैसे नाम पड़ा? बिकॉज ये इन्वेजिव, जो इम्पोर्टेड वीट आया था PL 480 में, सर कांग्रेस की सरकार थी, सो द फार्मर्स दे रिपोर्टेड कि ये वीड है, सरकार ने कुछ नहीं किया और वो इतना ग्रो हो गया, देन दे गिव इट द नेम कांग्रेस ग्रास। ये कांग्रेस की गिफ्ट है कंट्री को। दैट्स द स्टोरी, ऑन विकिपीडिया इट इज। Okay. Okay, so what are we learning is, wherever your books are mentioning any example, anything that is commonly heard, any comparisons, you should pay attention to these. Okay, these can be asked. आगे बढ़ते हैं। All aquatic plants use water for pollination. 5 seconds quickly. Okay, wind and water are major pollinators in some plants. Wind and water are major pollinators in some plants. Quickly, 5 seconds. Yes. अब यहाँ confusion नहीं है, because stress is on some plants, है ना? अगर मैं some हटा दूं, then would have heard. Then generally, in most plants, this is hidden. Okay? I hope I'm not confusing you. Am I confusing you? No, sir. So what would be the answer in case you would remove some and it would be general Wrong. defect? Or Would have heard. Wind and water are major pollinators in plants. If this were the statement, means in most plant is hidden. In most plant, तो would have heard नहीं हो जाता। मेजर पॉलिनेटर्स हमने क्या सुना है? एनिमल स्पीशीज, ये सुना है ना? विंड एंड वाटर, दे आर पॉलिनेटर्स बट नॉट मेजर। द स्ट्रेस इज ऑन मेजर। या abiotic factors हैं बुक में, तो ये भी लिखा है abiotic factors are not major pollinators in plants, only in some plants they can be. Yeah? This completing of statements helps. Yes. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमने पीछे वाले जो स्टेटमेंट करे थे ना, जहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, वो भी एक बार दोबारा रिव्यू कर लेना। ओके Yes. तुम्हारी बुक में एग्जांपल मेंशन्ड है, क्यूकम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ठीक है, ओनियन, लोबिया, कॉटन, ये सब। दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हिच एनिमल्स विजिट देम।
Okay, on page number 31, note down. On page number 31, second paragraph from the top. Okay, have you noted down? Yes, sir. Page 31, second paragraph from the top. It is saying, why don't you observe some flowers of flowering of following plant: cucumber, mango, people, coriander, papaya, cotton, etc., rose, lemon, eucalyptus, banana. Okay, these are common names given. Question kya hai? Try to find out which animals visit them and whether they could be pollinators. Okay, this is the question. We can expect a one statement question on this. Okay, just like lemongrass wala question. Fine. So what you have to do is, what are the common pollinators for each of these plants? Ye dekh lena bas. Can this be done, or is it adding too much? Yes, sir. weight? हाँ, ये थोड़ा सा doable type है. We want to depend our reduce our dependence on elimination as much as possible through these exercises. Of course techniques work, but जितना कम से कम हो तो समय उतना हमको ज्यादा मिल जाएगा बाकी questions में. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers. True or false? 5 seconds. Prabha, why wrong? So hermaphrodites have both the male and female this thing, and I think generally we've heard that मतलब they are not, ऐसा नहीं रहता है. Generally you have heard कि वो वैसा नहीं रहता है. शायद. Okay. ये बता दो, ये statement standard fact है या नहीं है? है. Would have heard होगा या नहीं होगा? It's Would have heard. important. It's important, right? Yeah. Would have heard level का है या नहीं? हाँ है. है. It's given in the book. You have just missed it somehow. It's given in the book. Okay. Page number 31, outbreeding devices is the heading of this paragraph. It says majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Majority of hermaphrodite. Okay. Thank you. Thank you. तो देखो ये एक्सरसाइज ही बहुत तुमको वो बता देगी कि स्टैंडर्ड फैक्ट नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, तब एलिमिनेशन में एक्यूरेसी शूट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी. Then there are certain examples of other plants. Papaya, in papaya, male and female flowers are present on different plants. So some plants will have male flowers, some will have female flowers. Like it works like that in papaya. So this is called dioecy. Okay. तो इस टाइप के examples को तुमने note करना है. These are the kind of things that are asked in exam. So dioecy is which place? Sorry, page. DIOECY, page 31. This is. Thank you. Third paragraph, last line, second last line. All angiosperms produce seeds. True or false? Quickly. Five seconds. Standard fact? Yes. If I ask, all plants that produce seeds are angiosperms. All plants that produce seeds are angiosperms. 5 seconds. Yes. It doesn't work the reverse way. Okay. Lupine, Lupine, lupine is a plant whose seeds can stay dormant yet useful for thousands of years. Lupine is a plant whose seeds can stay dormant yet useful for thousands of years. True or false? 5 seconds. Anjali, why false? I honestly thought it's deep fact. बहुत shocking नहीं है ये statement. मतलब deep fact. Anjali, are you doing the exercise in the G sheet? Are you identifying the statements
marking the statements as per the techniques and then assessing them for each So technique? I've done some also. You have done for some questions? I've not done also because I used a pen and paper, so then I'll fill that up. Okay, so I mean you don't use G sheet, you use a pen and paper, you are saying? When I was doing it, I was filling, and then हाँ. I just didn't. Then you just stopped. देखो ये दिख रहा है. हाँ This जी is the reason why you're not getting right. accuracy. वो बहुत जरूरी है. This is a has to be correct statement. Is it not a झटका statement? Okay, हाँ जी sir. झटका deep fact वाला एंगल ही नहीं आएगा यहाँ. Thing has to be correct, but then there was okay, maybe I was wrong, but then the 1,000 years factor came in, so then I thought so. For thousands of years बोला है ना, methane stays in the atmosphere for a decade or two. Do you remember that statement? हाँ जी sir, हाँ जी sir. तो उसमें अगर ये बोल देता for 12,000 years, हाँ जी sir. तब डिफैक्ट हो जाता है. एग्जैक्ट पिन पॉइंट फैक्ट पूछ रहा है, ठीक है sir. राइट? तो you have to feel the energy of the statement. If it is talking of an idea more than a fact, then it's more likely to be correct. ठीक है. हाँ जी sir. So can I ask a doubt generally regarding ET? So more for just general students who might not be here. I can see the benefit of having a G sheet because filter लगा के pattern दिखता है. दिखता है. बहुत अच्छे से दिखता है. Yes. If someone is not comfortable with G sheet for any reason, and they're using pen and paper, would having different sets of papers कि सारे standard fact एक ही sheet में अलग हैं, bundle बना दें, will that work? Like, because then I think people will feel a little more assured कि it's okay if they're just using pen and paper. If they are not using G sheet, then the next best tool, actually even better tool, is the ET tagging channel which I've created. Ah, yes. That is the single most effective. Anjali, have you? I think, I mean, I don't want to sound like a salesman here, but you can consider that channel. उसमें मैंने पूरा tagging करके रखा हुआ है. If you feel हाँ कि तुमको G sheet थोड़ा overwhelming हो रहा है, वहां पे सीधा क्लिक करो टेक्निक के ऊपर, वो टेक्निक के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आ जाएंगे. So that can be handy. The other thing is, I personally also have tried, using pen and paper. I was a very pen and paper person, but then I was forced to shift to these spreadsheets and digital tools in the recent 2 years because of their effectiveness. Like pen and paper can never match the flexibility of a digital tool. That is for sure. ये मेरा experience है. तुम इसको as a given रखो. Don't, in fact, it would be, inventing zero again अगर तुम इस चीज को टेस्ट करोगी तो. हाँ जी, so it's I should be more proactive. हाँ, मतलब उसमें इतना लिखना पड़ेगा, इतना सारा वो करना पड़ेगा ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है. इनफैक्ट आई यूज डिजिटल टूल्स लाइक आईपैड, उसमें वो पीडीएफ रीडर्स होते हैं, उसमें भी अगर आप करोगे, यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ पीडीएफ्स इन दोज, यू कैन राइट ऑन दोज, बट स्टिल वो भी नहीं काम करता है एज वेल एज दीज स्प्रेडशीट्स और द टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया हुआ है. इन एनी केस, अगर फिर भी तुमको लगता है कि दिस इज व्हाट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन, तो तुम एटलीस्ट वो स्टेटमेंट लिख लो. मेक डिफरेंट पेजेस फॉर डीप फैक्ट, रिवर्स डीप फैक्ट हैज टू बी करेक्ट, हर one page for one kind of technique, and then write at least just that statement which is there for the question. और वो statements को then you'll get a collection of statements of one kind on one page, and then you can compare, you can study. ठीक है अंजलि? हाँ जी सर. ये करना है तो सही हो जाएगा. आगे चलते हैं. Sex of the baby is determined by the mother and not by the father. True or false? 5 seconds. Standard fact. अब देखो, ये डीप फैक्ट हो ही नहीं सकता बिकॉज कंपैरिजन हो रहा है. समझ रहे हो? मदर है या फादर है, यू हैव टू हैव दैट नॉलेज. इसमें कोई डिफैक्ट का एंगल ही नहीं हो सकता. तो there's a false statement. It's determined by the father. It's given in your book. Okay. The heart is the last organ to be formed in an embryo. वो बेबी को एम्ब्रियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Fetus. Fetus. Okay, fetus मान लो. ठीक है, that baby. Okay.
The heart is the last organ to be formed in a fetus. 5 seconds. प्रभा, टेक अ कॉल. क्या कर रही हो? कॉल लूं इस पे? हाँ. क्या डीप फैक्ट है क्या? सोचो. बुक में तो होना चाहिए ये. ओ, बुक स्टैंडर्ड फैक्ट यूजुअली रॉन्ग. सोचो. SFUW लगा है. Think on logical lines. Can the heart be the last organ to be formed in a fetus? No, it can't. वो अल्ट्रासाउंड और वो सब हार्ट से ही तो होता हाँ है. हाँ हाँ, कान कान समझ हाँ. गई. It Nice. cannot be. या वो लगाया नहीं, लॉजिक नहीं हाँ. है. हाँ. ऑक्सीटोसिन. अच्छा ध्यान दो, ऑक्सीटॉक्सिन नहीं है, ऑक्सीटोसिन है. ओके. ऑक्सीटोसिन is the most important secretion for the expulsion of the baby from the uterus. Oxytocin is the most important secretion for the expulsion of the baby from the uterus. True or false? 5 seconds. Why is it false, Shivangi? So would have heard. So what have you heard? If not oxytocin, then what? Something different, not What? like तो would have word लगा रही हो तो कुछ तो सुना होगा ना फिर. stupid बन रही हूँ सर अभी थोड़ा. प्रभा, शिवांगी तो stupid बन गई है, तुम बता दो. So I actually don't think it's would have heard. We have heard about oxytocin playing an important role in delivery. We know about that. हाँ. Most important secretion में, now there are other pituitary glands से भी काफी release होते हैं. I don't know which one is the most important. So I thought it was deep fact. बात यहीं आ जाती है. अच्छा. हनी बी इज द समझ मोस्ट गई. इम्पोर्टेंट पोलन हाँ, ग्रेन वाला. दिख है गया ना, दिख. कुछ और नहीं सुना. वहां अगर भी यही गलती की थी. वहां भी यही गलती रिपीट हो गया. शिवांगी, Very nice. आर यू आउट ऑफ द स्टुपिडिटी? right sir out of it. यस. देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमने सुना ही होगा, बुक में मेंशन ही होगा यार. अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ और होता तो वो लिख देता ना, उसको ऑक्सीटोसिन से ही क्या प्यार है. Right sir. Right sir. है ना, तो जो लिखा है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. दैट्स इट. मैं most important पे अटक गई इसलिए like I हाँ. put it as false. ठीक है सर. Standard fact. So what's really cool about this experience is my patterns of mistakes are very clear to me. Like I can see because of the previous honeybee mistake and this one, यस. I know the kind of mistakes I make. I think that's just beautiful. Thank you so much. यस. नहीं, बहुत अच्छी बात है. देखो वही है कि थोड़ा समय बेशक लग रहा है ये क्वेश्चन बनाने में, बट देन इट इज एडिंग वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू नो प्रिसाइसली कहाँ काम करना है तुमको. इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. ट्रू और फॉल्स? 5 सेकंड्स. प्रभा, चलो बताओ क्यों. I don't, matlab, just by logic only, कि India can't be. There were other countries that got independence before us, slightly more. शिवांगी. So it was one of the first countries, not first country. Yes. ऐसा मैंने पढ़ा. Would have heard हो जाता. अगर फर्स्ट कंट्री होता तो would have heard, Nice. right? This is the difference between the previous statement. Oxytocin is the most important. वो stronger statement था, फिर भी correct था, right? This is like similar kind of statement, but then यहाँ defect लगेगा या would have heard लगा लो तुम इसको. ठीक है. अब यहाँ पे हमको ये भी याद करने की जरूरत नहीं, which was the first country, not needed. This is too unimportant a fact for that. But oxytocin is too important for that. Do you get the point? कहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए, कहाँ पे नहीं. पॉलिनेशन में पता होना चाहिए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पता होना चाहिए ऑक्सीटोसिन वाले कौन सा मोस्ट, बट इसमें नहीं पता होना चाहिए. ओके, यू गेट माय फिर पॉइंट? टॉक्सिन और टोसिन का आपने दिमाग में डाल दिया. आज तक मुझे नहीं था, अब आज से हो गया मेरे को. मैंने भी ये अभी भी बोलते हुए ऑक्सी वो एक्स आ जाता है तो टॉक्सिन ही निकलता है फिर, वो बाय डिफॉल्ट है. इट्स तो ये आपने डाल दिया दिमाग में. हाँ. इट्स मैं वही सोच रहा था यार, ये टॉक्सिन टॉक्सिन क्यों बोलते हैं. देन आई नोटिस द स्पेलिंग, इट इज सी, इट इज नॉट. आई यूज्ड टू से टॉक्सिन टिल डेट. आज ही मैंने इसको नोटिस किया. तुम जब तैयारी करने लगते हो तो ऐसा ही होता है, जर्मन को ग्रामीण पढ़ने लगते हो. ओके, इट इज लाइक दैट बाय डिफॉल्ट. आगे चलो. एंड दीज थिंग्स मेक अस मोर लॉजिकल. ये जो हम हिडन वर्ड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोरोलरी बना रहे हैं, व्हाट एल्स वी वुड हैव हर्ड. जहां वुड हैव हर्ड लगा रहे हो वहां ये जरूर सोचो कि इज इट समथिंग इंपॉर्टेंट इनफ कि तुमको पता ही होगा और बाकी दूसरा क्या है.
in which case it becomes standard fact. अगर पता है दूसरा तो standard fact ही बन गया, right? Yes, sir. Tubectomy can be reversed. Tubectomy can be reversed. True or false? 5 seconds. Shivangi, take a call. Prabha, why is it false? It felt like because of the surgical process जो दिया था, ऐसा लग रहा था कि नहीं, but फिर से अगर उसको join कर देंगे तो शायद हो सकता है. Can be reversed, sorry. Possible. यहाँ पे जो can be है वो actually ET वाला can be है हमारा. Possibility वाला. है ना? Because it to say that it cannot be, it requires specialist knowledge. Reverse deep fact मान लो. Reverse deep fact. Nice. ठीक है? तो ये पेजेस कौन से हैं जहाँ से आप पूछ रहे हो? 62 फर्स्ट 4 चैप्टर्स थे आज टेस्ट में. 62 पेज है ये. ओके. अच्छा, एक और वो अपना क्वेश्चन था ना, टैटूइंग से कौन से डिसीजेस स्प्रेड होते हैं? चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, एड्स, ये था ना. देखो बुक में मेंशन्ड है. हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन बी transmitted by sharing of needles. Now if UPSC says hepatitis C, it will be false, because अगर B दिया है तो C भी दिया होता, फिर वो would have word बन जाता. अंजलि, शिवांगी, are you with me? Sir, sorry, इसको थोड़ा सा UVA UVB के साथ comparable है क्या ये statements, in the sense that what UPSC could have done with this in terms of standard fact, non-standard fact? देखो यहाँ पे बहुत clearly I think when we are talking of hepatitis B is the most popular, right? Yes sir, इसी का वैक्सीन भी है यूनिवर्सल प्रोग्राम. सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी ही यूज आता है ना न्यूज में. हाँ सर. और यूवी की जब हम बात करते हैं तो कौन से टाइप का यूवी सबसे ज्यादा आता है? कैन यू रिकॉल? आई तो कांट आपने बोला है कि I think I also can't recall. नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया. यूवीज अगर सोचोगे कि कौन सा A B या C, A और B तो आई डोंट थिंक कभी न्यूज में भी रहता है A और B. सीधा C की बात करते हैं. नोटिस का कमी होगा. हाँ, नोटिस का कमी होगा. मैंने भी नहीं किया सर. प्रॉबेबली. और तुम ये भी देखना, एंड नाउ दिस इज वेरी मच आस्केबल. ये क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन बन गया अब कोविड के बाद. ऑलरेडी अ क्वेश्चन ऑन वाटर प्यूरिफिकेशन हैज कम, एंड नाउ UPSC कैन गो वन स्टेप फर्दर एंड टॉक ऑफ UVC. तो वो B और A और B को कैटेगोरिकली हटा देते हैं कि A और B डजंट हैव एनफ एनर्जी टू किल कोविड. वो C ही बनाते हैं. और वाटर प्यूरिफिकेशन में C यूज होता है, कोविड में भी C यूज होता है, बल्ब में. ठीक है? यू कैन गो टू Amazon और वो सैनिटेशन बॉक्स मारोगे ना, उसमें देखो UVC बल्ब बड़ा बड़ा लिखा होता है, UVC है वहां पे. गॉट इट? Yes. तो ये वो मार्केटिंग वाला एंगल भी तुम देख लो. मार्केटिंग में UVC बोल ही रहा है. ठीक है? एम आई क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन और इज इट बेटर? लाइक इज इट बेटर? इट्स गुड. जहां भी तुम लोगों को लगे कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ और, बिकॉज दिस इज द एब्सोल्यूट कटिंग एज. ओके, मेरा भी यही थिंकिंग है. इससे ज्यादा तो मुझे भी क्लैरिटी नहीं है, तो और सोचना पड़ेगा. तो तुम लोग मुझे बताओ व्हाट इज गेटिंग कंफ्यूजिंग, सो दैट वी कैन थोड़ा सा इसको रेगुलेट करने की जरूरत पड़े. बट टिल द टाइम इट इज एडिंग क्लैरिटी, वी शुड बी एट द कटिंग एज एट ऑल टाइम्स. फाइन. तो ये जो पीछे वाले होते हैं ना, वो आसान हो जाएंगे फिर. हाँ. So hepatitis C वाला case I think can be checked on Google, because I think there are hits where it's saying it can be caused by tattooing. It's basically check करने वाली बात होगी, बस और कुछ नहीं. ओके. तो मतलब देखो, हेपेटाइटिस C is not a very popular disease that is in news. Also उसका causal factors. हाँ. This hepatitis B, hepatitis C, the basic factor of transmission of disease is through the blood. Is it? For AIDS or hepatitis B. So let it be hepatitis A or C. The disease can be transferred through the needle because it gets exposed to can be. Where did you get this knowledge from? Just logical thinking, sir. Because how this disease is getting passed from needle. If it is if that is the case, then it should have said infections like hepatitis. So hepatitis B is the most dangerous one to the human. Not hepatitis C doesn't cause the life endanger. I don't think we can say that. But देख Also, लेना.
वही है कि हेपेटाइटिस बी की जगह अगर ए देता फॉर एग्जांपल तो that would be wrong because A is jaundice and jaundice doesn't happen with needles and all. तो मतलब वही सब गूगल वाली बात है शायद. देख लेना एक बार. What we discuss here, if any one of you don't have to accept whatever I'm saying because I'm not googling and all these facts. I'm just pure इस पे बना रहा हूँ whatever experience of PYQs and what is written in the book. You people take a note of whatever question you feel may require some more insights, and you do that and share with me if you feel that what we discuss in the class is something incorrect. Okay. We'll take responsibility for knowledge because you're working on the cutting edge questions that we need training in. Done. Yes, you take responsibility for the factual accuracy of these statements. Done. So that will be all for today, guys. Thanks for joining. It was a decent experience, in fact, pretty exciting experience for me. How do you feel? Very exciting. Let me stop the recording.